एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात के लिए भी काम करेंगे। ढेर सारे चीजें हमने इसके साथ जोड़ी है, इसमें भी विपुल संभावना है। आने वाले 2 महीने के अंदर ही मेरा सिर्फ कोऑपरेटिव के एक्सटेंशन का देश भर का दौरा है। मैं उत्तर प्रदेश भी आऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे कम कोऑपरेटिव रखने वाला प्रदेश है और सबसे ज्यादा संभावना रखने वाला प्रदेश है। तो विपुल मात्रा में कोऑपरेटिव की संभावना यहां पड़ी है। मित्रों, यहां पर जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और मैं मानता हूं कि राज्य में इतने सारे एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य में नहीं बने होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, बलिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगामी गंगा एक्सप्रेसवे, ढेर सारे एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को, इतने बड़े राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम किया है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आज कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था भी हुई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद सबसे ज्यादा आवाजाही की कैपेसिटी एयरपोर्ट की किसी एक राज्य की होगी तो वो भी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। बुंदेलखंड के अंदर पानी की किल्लत थी, केन बेतवा आगे बढ़ गई, बुंदेलखंड में भी अब कभी अकाल सहन न करना पड़े, इस प्रकार की हमने नीति करी है। और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जलमार्ग से लेकर सारे प्रकार की गति को कोऑर्डिनेट करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहला जलमार्ग उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है और यहां से वाराणसी और इलाहाबाद से लेकर हावड़ा तक पूरा जलमार्ग बनने से आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 1/3 से भी कम होने वाली है। बहुत बड़ा पोटेंशियल खड़ा करता है उद्योगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का संकट था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के आने के लिए पहले मैंने कहा 5 संकटों को योगी जी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। और एक जमाना था जब इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली जाकर करनी पड़ती थी। आज पूरे देश के सभी राज्यों के इंडस्ट्रियलिस्ट Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. A review report from the UK is making headlines in India because while it talks of the threat that UK and its people face, especially from radicalisation, it has more or less confirmed the K2 threat that exists for India, in India and overseas. The report mentions that the biggest threat to British people is Islamist radicalisation. This in itself is pretty close to home for us. The independent review called Prevent has also mentioned eco-terrorism, disruptive activities by the extreme left and open support in the UK for Hamas. The review was commissioned by Preeti Patel when she was Home Secretary, and current Home Secretary Suella Braverman has accepted all the recommendations. Now, what does this report say for us that is key for us in India? The report warns that pro-Khalistan extremism is developing among the UK Sikh communities, and these groups are spreading false narratives about the UK and the Indian governments. The report also explains how rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiment, particularly around the subject of Kashmir. Has this report then more or less reconfirmed the K2 threat that persists for India, especially from outside of its borders? And can India use this report to rally more support in times to come on issues of Khalistan and Kashmir with other governments? We'll take those questions to our guest in just a bit, but first, these are some of the 10 most important notes as far as this report is concerned. So this report reviews UK's anti-terror strategies. It mentions Islamist terrorism and extremism as a primary threat, the most important threat that it faces. It says that consistently Islamist terror is accounting for majority of terror threats on its land.
80% terror probes are pertaining to Islamists, 10% are right wings. We continue our debate on this in just a bit, but let's also cut across to Prime Minister Narendra Modi, who's speaking right now. चार पीढ़ी और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई हैं। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा, तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा, मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा, देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं, उस एक बात को आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं।
और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं, इतनी ठंड में आप क्यों कर सुनाते? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमिया तुस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं, वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आएं, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे, दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया। और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है जी। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और आज वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं, अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं,
महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी मिशन के साथ अल जमायातुस सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपका करिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सीखने आते थे। अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा। इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये देश की प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में यूनिवर्सिटीज भी खुली है। मेडिकल एजुकेशन जैसी फील्ड में जहां युवाओं का रुझान भी है और देश की जरूरत भी है, उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप देखिए 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए। बीते 8 वर्षों में देश में, और एक खुशी की बात है, देश में हर सप्ताह एवरी वीक एक यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज खुले हैं। एवरी वीक। ये स्पीड और स्केल इस बात के गवाह है कि भारत उस युवा पीढ़ी का पुल बनने जा रहा है जो विश्व के भविष्य को दिशा देगी। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा हमारे आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता बनी रह सकती है। इसलिए देश ने शिक्षा व्यवस्था में एक और अहम बदलाव किया है। ये बदलाव है एजुकेशन सिस्टम में स्थानीय भाषा को महत्व देना। अब हम देख रहे थे सारा गुजराती में जिस प्रकार से कविता के माध्यम से जीवन के मूल्यों की चर्चा हमारे साथियों ने की। मातृभाषा की ताकत, मैं गुजराती भाषी होने के कारण बहुत शब्दों को से ऊपर उस भावना को पकड़ पा रहा था, मैं अनुभव कर रहा था। साथियों, गुलामी के समय अंग्रेजों ने इंग्लिश को ही शिक्षा का एक पैमाना बना दिया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी हम उस हीन भावना को ढोते रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे गरीब के बच्चों को, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग को हुआ। प्रतिभा होने के बाद भी उन्हें केवल भाषा के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी स्थानीय भाषा में की जा सकेगी। इसी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से देश ने और भी कई बदलाव किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने पेटेंट इकोसिस्टम पर काम किया और पेटेंट फाइल करने को आसान बनाया है। आज आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों में पहले से कई ज्यादा संख्या में पेटेंट फाइल हो रहे हैं।
आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए स्कूलों में लर्निंग टूल का उपयोग होने लगा है। अब युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे हमारे युवा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस खोज रहे हैं। साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्टम और उसका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों युवाओं के भविष्य की नींव रखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं। बीते 8-9 वर्षों में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ऐतिहासिक सुधारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस दौरान देश ने 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया। पहले इन कानूनों का डर दिखाकर एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जाता था। इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था। लेकिन आज सरकार जॉब क्रिएटर्स के साथ खड़ी और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है। हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए जन विश्वास बिल लेकर आए हैं। कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवाद से विश्वास योजना लेकर के आए हैं। इस बार के बजट में भी टैक्स दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों और उद्यमियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इन बदलावों से जो युवा जॉब क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे। साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है। यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को डिजिटाइज करने का ऐलान भी किया गया है। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो पुराण है हस्तलिखित, वो देख रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। किसी भी पद्धति से जुड़े अगर कोई प्राचीन टेक्स्ट है तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए। बीच में मैं मंगोलिया गया था, तो मंगोलिया में हस्तप्रत
भगवान बुद्ध के जमाने की कुछ चीजें थी, अब वहां पड़ी थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूं, और उस काम को हमने कर दिया। हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है। युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। दाऊदी बोहरा समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत इन विषयों पर पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है। आप इन अभियानों में भी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता भी कर रहा है। बोहरा समाज के जो लोग विदेशों में फैले हैं, वो इस अवसर पर विश्व के सामने सामर्थ्यवान होते भारत के ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह इन जिम्मेदारियों का उतनी ही खुशी से निर्वहन करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी कामना और इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया। सैयदना साहब का विशेष प्यार रहा है। पार्लियामेंट चल रही थी, फिर भी मेरे लिए यहां आना उतना ही महत्वपूर्ण था, और इसलिए मुझे आज आकर के आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। The Prime Minister speaking there in Mumbai to the Bohra community. Just for the benefit of viewers joining us now, we are discussing the UK report that highlights Islamic radicalisation and the larger terror threat for UK. But why is this report important for us? Let me break down what it says on Kashmir, for example. It says Pak rhetoric is inflaming anti-India hate about Kashmir in UK. Pak clerics with a following in the UK call for violence in Kashmir. UK Islamists significantly are interested in the Kashmir issue. They seek to exploit the Kashmir issue in the future. And it also mentions how terror convicts in the UK have fought in Kashmir in the past, and how several terrorists from Kashmir have joined the Al-Qaeda, which is the global terror network. Here is also what it highlights on pro-Khalistan movements in the UK. It says pro-Khalistan extremism is coming from UK Sikh communities. UK's Khalistani groups are spreading false narratives. These false narratives are being spread about both the UK and the Indian governments. They spread misinformation on repression by the state. They narrate and glorify pro-Khalistani violence in India. The narratives also praise pro-Khalistani violence, and of course they are against Indians, predominantly Hindus, overseas as well. Let's open this up to the guests joining us. Let me first go across to Kuldeep Shekhawat, who's director, MATV. Adit Kothari is founder, Indic Society. Majid Haidri, senior journalist, is also joining us. And with us is Ramneek Singh Maan, who's also an analyst, political analyst in the country. I do thank all of you for staying with us and for your patience. The Prime Minister was speaking earlier. I want to go across to Adit first up. Adit, you know, this report is virtually confirming all of the things that we have reported on. For example, recent Khalistani attacks in Australia against, Indic communities, Hindu communities. We've seen some of the violence being fanned by pro-Islamists in the UK against Hindu community and maligning of India and RSS and Hindutva, etc. And this report is basically confirming what we've been debating and discussing in India, that this threat exists. It is a pointed, very potent threat, and it is coming from outside India.
Absolutely spot on. I mean, it completely vindicates everything that the British Indian and the British Hindu diaspora have been saying for a very, very long time. It completely vindicates everything that the Indian governments for generations have been asking the West to introspect and control this particular monster that has now grown into a Frankenstein. Uh, and this is what the report is essentially sort of providing an insight into. Let me break this for your viewers as well. So Prevent, which is a UK government appointed independent counter-terrorism agencies, the report was against them, and it essentially demonstrates the timid response of the rise of Islamism and towards the rise of Islamic fundamentalism that Prevent has essentially demonstrated. The rise of pro-Khalistani elements within the UK that have demonstrated how problematic they can become for the state has also been demonstrated and recorded in this particular in this particular report. The report is essentially an insight and sort of a self-introspection tool for the British polity to check on how much patronage they have given in the name of political correctness to some of these elements and how problematic they can actually become for the British society. And you rightly pointed out that 80% of the UK's counter-terrorism live investigations are currently related to Islamic fundamentalism, and only 10% is dedicated to extremist right wing, which, as per again some academicians, is also on the rise, primarily because the state has been unable to sort of check into the political correctness vis-a-vis the Islamic. So, are you saying that what is true? For example, this is debated in India, that why is there a rise in, for example, very extreme reactions on the Hindu side? Are you of the view that there is this so-called right-wing extremism rising in the UK because fundamentally a lot of groups believe that the governments have left them to fend for themselves? They don't really want to do anything against Islamic radicalization or terrorism or even crime, for example, and therefore this is on the rise. Is that the right thing to say? I would say so. That is probably the right summary. And just so a continuation to that, you mentioned the K2 element earlier when you spoke about the Pakistani side of things. I mean, this is something that was hatched by Pakistan, after the Bangladeshi Liberation War, and that is a continuous strategy to bleed India with 1,000 cuts, and they have very, very well sort of coordinated themselves in the UK within the British academic circles. So now the British academia is giving platforms to those elements which are essentially talking about Kashmiri separatism and the Khalistani separatist movements in India, and this is being recorded in this particular report as well. Yeah, RVS Mani, who's former Under Secretary in the Ministry of Home Affairs, retired director from Government of India; Amjad Ayub Mirza, who's a political activist on POK, also joining us on the show, and I do thank you too for your patience. RVS Mani, I'm coming to you. This Kashmir threat, how Pakistan narratives are funneling into the UK, which is not a surprise for us. Both India and Pakistan have large diaspora in the UK, but that population in the UK is being made anti-India, and hatred towards India is being spread using the issue of Kashmir. How do you read that? See, Pakistan has a lot of stronger footholds. For example, there is a Pakistan Islamic Academy in Stockport Road, London. I've lived there in Stockport Road, Manchester. I've lived there in Manchester. All around the Manchester, the suburbs of Cheetham Hill, the Cromsall, the Oldham, everywhere, huge Mirpur, Khasi, Pakistani, POK residents have been able to settle there and get their footholds, and they are a huge lobby. There's a vote bank. No wonder that Jack Straw made out a BBC documentary. There's a reason for that. There's an audience for that. But the false narrative has been happening, and till 2000 Act of Counter-Terrorism of UK did provoke about that. Section 58 talks about holding propaganda material, etc., etc. We studied that when we wanted to review our Counter-Terrorism Act. Notwithstanding that, nothing has been done for the last 22 years. I don't know why. And now, because now it has started biting their own hands, the UK, see, basically, this is in existence and this is in the knowledge of the government, whether it is the K1, the K2, the Khalistani extremism militancy being supported there.
being not only being bred there, it is being fanned out there. All these things are happening in UK, but now it has started too much. The Leicester riots and the repeated demonstration, the violence and the Aldrich Indian High Commission and all that, repeatedly on every important occasion, these are all happening. Now it has started biting their own hands. And not only that, even in the farmer strike 2 years back in the farm laws, the British Prime Minister, then Boris Johnson, had lent support. It's very openly said that the British government, but only recently, after he lost his job, now the economy, basically Pakistani diaspora living there do not work out on any skills and all that. They are into violence. We are very forthright. They are into maximum. So, for example, the ISIS recruits the last year, were 10 of the ISIS recruits went for returnees from Syria were Pakistanis. Yeah. And 2011 also, 2021 also, there were 3 terrorist attacks. All of them were Islamic attacks. So this is becoming terrorism, and Islam 80%, as you said, is right. But Khalistani also is being taken as a corollary to the Islamic terrorism. Absolutely. And we've known that in India, isn't it, for a while. Ramneek Maan is also joining us. Ramneek Maan, you know, this collective threat of the Kashmir issue, which obviously has been burning since the abrogation of Article 370 as well. Overseas, you know, in India, it doesn't find that much resonance except in pockets. But fundamentally, the rage over the abrogation comes from foreign soil. And we've seen some Twitter trends, etc. Being trending as well. And then combined to that is the Khalistani threat. Now, the Khalistani threat very much exists in India too. And it gets a lot of its muster from overseas as well. Do you believe going forward, this is the biggest fundamental threat for India too? See, Shivani, I think the West has taken a little too long to realize the concoction of the Khalistanis and the Islamic extremists can actually cause a lot of damage to their society. Let's understand the background of Pakistan. Pakistan is the brainchild of the West. They are the ones who planned and executed the existence of Pakistan. As a matter of fact, Pakistan is staying afloat despite of all its problems and troubles and turmoil within, just because of the support of the West. That is one. Number two, now when you talk about the turmoil that exists in India, let's say the Khalistani factor or the Kashmir, which is the larger design, a part of the K2 of the Pakistani ISI. Now the Khalistanis and the Pakistani ISI have realized that Sikhs in India are an expendable commodity. They can be killed, and they are trying to create a divide between the Hindus and Sikhs overseas. So that is a larger plan, and that's why you see a spree of attacks on the Hindu temples, whether it is in Australia, whether it's in Canada, and that might actually go forward in different parts of the world. But yes, you know, that is one thing which the local governments overseas need to really check. But the larger design, once again, I would reiterate, is to divide the peace and harmony and the love and apathy between the Sikhs and the Hindu community within India, isolate Sikhs. And, you know, considering Sikhs as an expendable commodity, if Sikhs die in India, it's their benefit, it's in their favor. And this is something which the Khalistanis or the people who've been misled into believing that there can ever be a Khalistan on Indian soil, it could never exist. So these people need to realize before they start getting their youth, their young people and, you know, young boys and girls killed, the way the Islamist terrorists have got the Muslim youth killed over the world. This realization needs to come. Yeah, why has this realization come so late is frankly a question that some of our guests have alluded to. It's basically political correctness that has kept a lot of countries from acting on these threats, even though they were in their face. But going forward, Kuldeep Shekhawat, since you're joining us from London, I want to understand from you, do you really believe that there's a change of heart and a change of will as far as the UK government is concerned, that they will actually act on these threats, their funding, their presence, etc.? Or is this something that is still on paper? We'll wait and see whether it's ever really acted upon. Shivani, the cat is out of the bag. Simple as that. This was a hidden fact. British authorities never accepted this fact that there was an Islamist problem in the United Kingdom. We had been telling them, I live in London,
I do meet politicians and I've been telling them this is the biggest threat which is going to be very difficult for United Kingdom, but they were not agreeing to me. Suddenly, thanks to Preeti Patel and thanks to Williamson, Commissioner Williamson's report, sorry, has opened the entire Pandora's box. It has come clean that what is happening in United Kingdom and what has been the cause of all the trouble in United Kingdom. It's not Indian diaspora who is responsible for anything. It is the Khalistani element, and some of my friends were trying to mention this story, but actually the Khalistani elements have come into play because of ISI. We know. So it is Pakistan behind the back of everything. Still, the British establishment never agreed to the facts that were shown to them. Now it is out in open and they all know. But will they act on it? Mr. Shekhawat, do you believe they will actually act on it and go after these elements, or is this going to remain some sort of a knowledge that we all already were aware of? Sohela Brahman has given a clear indication that she has got 34 recommendations and she is going to go after all of them, and she completely agrees with the report. That is what she has assured everybody, and it's out in open that things will move in right direction as far as Indian community is concerned. Indian community has tried to fight it out. Indian community has tried to impress upon them. Indian community has tried to tell them. Indian community has time and again stressed upon this point that there is a problem, but it was not agreed on. But now hope to see a change in United Kingdom's attitude. Yeah. Ultimately, what happens is when you have so much anti-India hate being spread, Majid Hydari in UK, Australia, any of these countries, anti-India hate on the issue of Kashmir, anti-India hate on the issue of Khalistan. Ultimately who the victim is for the violence that happens either in India or in these countries? It's basically Hindus. Finally, will you accept that there is an agenda from whatever sources, whether you want to accept it or not, but there is an agenda that everybody is waking up to, which ultimately makes Hindus the target? So this whole narrative that somehow Hindus are the aggressors, which was sought to be built, is factually incorrect. Well, definitely, Shivani, you want me to blow hot and cold on the show. You want me to say that this British report is gospel truth, and the other British report, which had come some time back in the form of BBC documentary, that is the toolkit of Satan. That's not a British report on terror. A documentary is not a British report on terror. Come on, how can you compare the two? I'm talking about two British reports, one on TV and one in paper. No, but how can you compare a documentary on what something has happened? It's on a particular event. See, you are not letting me speak. That is what I am saying, that you want me to believe in one foreign report, which is this British report, but you don't want me to believe in Hindenburg research. I mean, you oh my God, why are you bringing all of that into this? Just because this report is written in saffron ink. I mean, what is the problem? Had this report is written in saffron ink? It was a typical case of saffron conspiracy. This report is a saffron conspiracy? By the British Home Department? No, this is a saffron. British government needs to probe it as to how come this report has been written in saffron ink, because Britishers are essentially secular people. They don't believe in this kind of Hindutva kind of ideology. This has been written. Basically, anybody who talks about the very real existent threat of Islamic radicalization is some sort of a saffron agendist, isn't it? You just don't want to face the truth. Yes, definitely. That is what I am trying to make the people aware of, how you people are making the world look at the problems. Oh my God. I mean, this is a different level of denial. You just don't want to see it, whether in India or overseas. This is not an Indian government's report. I have to accept this report, but I have to condemn the Hindenburg research. I mean, what kind of duplicity is this? No, so you don't have to condemn the Hindenburg report. No, then let you say that, let people accept it. Let that too be a gospel truth. If this is supposed to be a gospel truth, why not the Hindenburg research and why not the BBC documentary? Let the viewers don't compare a documentary to this. Adit Kothari wants to come in. He is also based. Sorry, I'm not quite understanding what is happening here. I mean, there's a limit to how much you can combine. Yes, Mr. Mani, I'll give you an opportunity. Amjad, Ayub has not even spoken. I'll give you an opportunity. But Adit Kothari, very quickly first. Please respond to what Majid Hydari is saying.
I mean, I would like to ask Majidji, I would actually want to ask him what does he smoke, because I want to smoke the same kind of shit. Okay, let's I mean, not, sorry, let's not apologies use for that for my language. Let's French. not use that language. Apologies for my French, but the point essentially being that this is the heights of false equivalences that anybody can draw. Uh, you know, equalizing the report that has been independently filed with the parliament and comparing that to a botched up job that few journalists from Al Jazeera and Caravan and Article 14 have essentially produced for the BBC. It's absolutely height of intellectual bankruptcy that anybody can indulge in. Okay. So, you have to look at the report objectively rather than looking at the rhetorics behind it. Yeah, actually the figures in the UK, whether it's the crime rate, and obviously this report talks about terror-related instances and investigations, the figures speak for themselves. You don't want to believe anything else, at least believe the figures. But Amjad Ayub, I'm coming to you. My fundamental focus today also is, how can India, for example, use this report to rally some of the foreign government support on both these issues of anti-India hate on the issue of Kashmir and anti-India narratives on the issue of Khalistan? Do you think this report will help India globally? Well, it definitely should help. The best thing is that if the Indian government facilitates a delegation from Pakistani-occupied Gilgit-Baltistan and Pakistani-occupied Jammu-Kashmir, who can visit the European capitals and give them briefing upon the historical facts, which are that Pakistan attacked the independent state of Jammu and Kashmir, and that as a result, Maharaja Hari Singh acceded to India. Secondly, this jihadi report about Islamic Jihad and Khalistan, I have been talking to the British police for past 27 years on several occasions and warning them of the threat of Islamic Jihad in Britain. Now, we have to understand that Islamic Jihad and the British deep state go hand in glove. Because of the Afghan Jihad, the British and the American CIA nurtured the jihadis, nurtured this narrative, which was then shifted towards from Afghanistan to Kashmir. And now most of the Kashmiris and Pakistanis in Britain are indoctrinated by the Pakistani narrative. There is a whole network. There is a whole network of mosques in UK. There's a whole network of mosques in UK that are facilitated by the Pakistan embassy's military attaché and the cultural attaché, and the ISI has been pouring in money into the Pakistan embassy through their diplomatic bag. That's why I always say, do not trust Pakistani diplomatic bags. Open each and every of their diplomatic bags, and that money has been transported to each and every mullah in Britain to infuse this jihadi narrative, this anti-India narrative. Okay, can I ask you very quickly, why do you think this change of heart has happened in the British government? Majid Hydari seems to believe this report is written in saffron ink. Why do you think this change of heart has happened in UK, where we all knew about these threats? Finally, they have accepted it, plain and square. This change of heart is because India, all of this Islamic Jihad has now become a threat for the existence of the British social fabric. Exactly. Now in Birmingham, in Manchester, in Oldham, in Nottingham, in so many cities, they are practicing Sharia law under the radar. So the Shariaization of British society, that is the biggest threat, that there will be no more Britain as... What about the saffronization? It is becoming a jihadi Britain. Britain is becoming the ground from where European jihad is being directed and financed. Yeah. So, well, finally, belatedly at least, people are beginning to rise up to that threat. Mr. Mani, I have 30 seconds left if you want to give a final word on that. Sir, actually, after Mr. Majid Hydari, you have already countered. I wanted to say the same thing. Amjad is right that things are happening and now it has started. Two issues. One is the strength of India growing up in the economic power. Number two is it has started biting the hand of Britain. The society of the British society is getting too much of marginalized. There are too much of fissures in the society. All these things have become a threat. That is the reason now the Britain has started saying what we have been saying, what we have known for the last 40 years.
from 70s onward, from the 2000, Britain's own law was there. If they had to act, they had the legal framework in place. In 2005, after the underground attack, they also strengthened their law. In spite of that, now only they have come to the realization that this is the reality. It is going to blow. It is going to blow up our society, our youth, because ISIS recruits have gone and come back, returnees. Absolutely. I have to leave it at that. Unfortunately, this was a bit of a curtailed debate, but once again, thank you all for joining us. Better late than never, and most important will to see how UK actually strikes down on all of these elements. That's really where the proof will be. I have to slip into a very short break. On the other side, we will get you more details on one of the biggest stories of the day. India has struck white gold in Jammu and Kashmir. Why is this lithium find so key? We'll get you more in just a bit. लगे हुए हैं जो कि ध्वनि तथा डेटा दोनों के प्रेषण में सक्षम हैं। तृतीय चरण को पृथक कर दिया गया है। यह अंतिम तंत्र वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल यह यान को अंतिम अभिवृत्ति तथा गति प्रदान करेगा। The velocity trimming module has ignited and is currently imparting correct orbital parameters for the spacecraft. सर्वप्रथम हम देखेंगे EOS 7 का अंतःक्षेपण। Velocity trimming module thrust cutoff. Plus 12 minutes. Satellite injection is the next awaited event. Satellite injection conditions are achieved. अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में EOS 7 का अंतःक्षेपण निर्धारित कक्षा में किया जाएगा। The nominal time of 785 seconds past the launch is scheduled for the prime satellite EOS 07 for injection. EOS 07 satellite separated. मुख्य उपग्रह EOS 7 का सफलतापूर्वक अंतःक्षेपण कर दिया गया है। There we have the confirmation of the prime satellite EOS 07 separating from the launch vehicle. Janus 1 satellite separated. Janus 1 के अंतःक्षेपण की पुष्टि की जा चुकी है। उसे सफलतापूर्वक उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। Janus 1 has also been separated, and here we have Azadi Sat 2 separation also. SSLV D2 EOS 07 mission accomplished. Handing over to mission director. सभी को बहुत शुभकामनाएं। मिशन इस तरीके से पूरा हुआ। SSLV D2 EOS 07 mission has been fully accomplished. With the successful launch of SSLV D2 EOS 07 mission, ISRO now has a new credible member in its launch vehicle family. Congratulations to Team ISRO. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 on a bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS 7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. Plus 1 minute.
Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को नियंत्रित करता हुआ आगे जा रहा है. The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions. On your TV screens, the simulation of the flight, the separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा. Second stage ignited, first stage separated, 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been separated. Performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with carbon fiber motor case contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. अब हम प्रमोचन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं. अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड. The closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been separated. The course correction of the launch vehicle takes place through a feedback Second loop. stage performance normal. SS2 द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ. SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा. इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रज्वलन के प्राप्त संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा. Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have started to acquire the data. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है. EOS-7 उपग्रह मुख्यतः ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे. इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं. EOS-7 का कुल भार 156 kg है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा. Stage separated. The third stage SS3 Stage ignited. has commenced its operation. Welcome back. In a big development, India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. The Geological Survey of India found the lithium reserves in the Salal Hairmana area of Raisi district in Jammu and Kashmir. The discovery is up to 5.9 million tons. So far, India had depended on Australia and Argentina for lithium imports. Now remember, lithium is a key component in rechargeable batteries that power numerous gadgets like smartphones and laptops, as well as electric cars. Experts say that the discovery could aid India's push to increase the number of electric vehicles in the country, especially cars, by 30% by 2030 as part of the efforts to cut carbon emissions. A little bit more of what has been found. 5.9 million tons lithium reserves found in Jammu and Kashmir, in the Salal Haiman area of the Raisi district. Previously, a small reserve was found in Karnataka, but that reserve was as little as 1,600 tons that were discovered in Mandya. Globally, lithium reserves concentrated
are concentrated in South America. Argentina, Bolivia and Chile have 50% of the global deposits. But, and this is where it's very interesting for India and the world, China controls 75% of lithium refining. Let's tell you a little bit more about lithium itself. It's the lightest metal on earth, therefore very, very important. It has the lowest density of all metals, 2 times lower than that of water. It forms only 0.0007% of the Earth's crust spread across the globe, so it's very rare. It is extracted from either brines or mined rock sand. It looks like a shiny metal that can actually be cut with a knife. Lithium is consumed mostly by battery makers as hydroxide or carbonate, but the uses vary from electric vehicles, mobile phones, laptops, cameras, even clocks and toys. Now, lithium was discovered in 1817, and since then the demand for this rare earth element has skyrocketed, so much so that it is today called white gold for the auto sector, and this is why. Each e-vehicle requires over 30 kilograms of lithium chemicals. Over 56% of the global lithium, though, is used in batteries, which run almost everything nowadays. By 2023, the demand for lithium is predicted to rise by 400%. Currently, about 85,000 to 100,000 is produced for use annually, and the production of this soft solid metal has increased by over 300% just between 2008 to 2018. Let's take a look at which countries have the biggest lithium reserves in the world. Now, as I mentioned, over 50% is found in what is called the lithium triangle of South America. 1/3 of the reserves in the triangle are in Bolivia, close to 27 million tons. Argentina has the world's second largest at 17 million. Chile comes third at 9 million. And then it is followed by countries like US, Australia and China. The Indian discovery puts it at one of the biggest reserves that any country has now. So that's the kind of edge it is giving India globally. There are, though, also massive ecological concerns when it comes to lithium generation. Lithium mining uses gallons of water and pollutes water resources. It increases carbon dioxide emissions, it depletes fertile land. It causes respiratory problems and produces massive mining waste. It is quite likely that more advanced and greener technologies like hydrogen will be adopted sooner and take over, for example, EV demand in the future. But as it stands, the reserve find in India is definitely going to keep it in good stead. With that, it's a wrap on Plain Speak. Thanks a lot for watching. ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡು ಮತ್ತು ಅಹವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ, ರೋಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ.